मैं गणेश पांडे इस वीडियो को प्रस्तुत करने का उद्देश्य 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परीक्षार्थियों के तैयारी में सहयोग करने का है। यह वीडियो अंडरस्टैंडिंग लेवल की सिखलाई को प्रेरित करता है। यह वीडियो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पर आधारित है। अभी आप देखिए, शुरू से जब हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का ध्यान करते हैं तो SOH, S फॉर साइन, O फॉर अपोजिट साइड, H फॉर हाइपोटेन्यूज, का, C फॉर कॉस, A फॉर एडजेसेंट साइड, H फॉर हाइपोटेन्यूज, टोआ that is tangent, O for opposite side, A for adjacent sides. This is opposite sides, this is adjacent side, hypotenuse. With the help of this trigonometrical ratio, first of all we write the hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square, that is the Pythagoras theorem. We divide the complete by hypotenuse square, then we get one formula, that is 1 is equal to cos square theta plus sin square theta. If you divide the complete Pythagoras theorem by base, we get sec square theta equal to 1 plus tangent square theta. Thirdly, if you divide by perpendicular or opposite sides, we get cosec square theta is equal to 1 plus cot square theta. To make it more understanding, सिखलाई के लिए मैं एक हेक्सागन तैयार किया हूँ, षष्ठभुज। यहाँ पर लिखा है, देखिए, टेंजेंट थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा। इसमें ध्यान देने की बात है, CO, कॉस, कॉट और कोसेक एक साइड में है, साइन, टेंजेंट और सेक एक साइड में है। अगर हम डायगोनली रिलेशनशिप ढूंढते हैं तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए, साइन थीटा और कोसेक थीटा का मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 आएगा। कॉस थीटा एंड सेक थीटा को मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका रिजल्ट 1 आएगा। टेंजेंट थीटा और कॉट थीटा, टेंजेंट थीटा के ठीक अपोजिट में कॉट थीटा लिखा हुआ है, इसका डायगोनली मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, रिजल्ट 1 आएगा। अब इसी चीज़ को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इनका रिलेशनशिप ढूंढेंगे। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, देखिए, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा विल बी इक्वल टू कॉस थीटा बाई कॉट थीटा, कॉस थीटा विल बी इक्वल टू कॉट थीटा बाई कोसेक थीटा, कोसेक कॉट थीटा विल बी इक्वल टू कोसेक थीटा बाई सेक थीटा, and sec theta will be equal to tangent theta by sin theta. Similarly, anti-clockwise direction में देखिए, cot theta will be equal to cos theta by sin theta, cos theta will be equal to sin theta by tangent theta, sin theta will be equal to tangent theta by sec theta, tangent theta will be equal to sec theta by cosec theta, sec theta will be equal to cosec theta by cot theta, cosec theta will be equal to cot theta by cos theta. Now, to memorize the values of trigonometrical ratio with respect to the different angles, here I have given the picture of left hand palm. This is little finger indicate the 0 degree. Next to this, that is 30 degree, 45 degree middle finger, index finger 60 degree, और जो थंब है 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। कोसाइन के लिए हम काउंट करेंगे इस साइड में कितनी फिंगर रह जाती हैं, साइन के लिए इस साइड में। तो इसके स्टेप्स हैं, काउंट द फिंगर। जैसे मान लीजिए साइन 0 निकालना है तो इसके इस तरफ 0 होगा, कोई फिंगर नहीं है, तो 0 डिवाइडेड बाई, देखिए लिखा हुआ है, काउंट द फिंगर, डिवाइड बाई 4 एंड स्क्वायर रूट, टेक द स्क्वायर रूट। तो 0 डिवाइडेड बाई 4, टेक द स्क्वायर रूट, अगेन यू विल गेट द रिजल्ट 0। साइन 30 डिग्री, अब साइन 30 डिग्री के लिए इस साइड में देखिए 1 फिंगर है केवल, साइन के लिए इस साइड में 1 फिंगर है, तो 1 डिवाइडेड बाई 4
and take the square root, that will be 1/2. दिस इज 45 डिग्री. साइन 45 डिग्री के लिए वैल्यू जब निकालना है तो देखिए इस साइड में कितने फिंगर हैं, 2 फिंगर हैं, तो 2/4 का स्क्वायर रूट लीजिए. ये स्टेप्स दिया हुआ है. उसी तरह से साइन 60 डिग्री के लिए इस तरफ देखिए कितने फिंगर हैं, 1 2 3. सो 3/4 होल का स्क्वायर रूट निकालिए, यू विल गेट √3/2. सिमिलरली 90, sin 90 degree, that will be 4/4 and take the square root, again you will get the answer 1. Sin 90 degree is equal to 1. For cosine, you just see, for cosine, if you want to take the value of cosine 30 degree, cos 30 degree, so you have to just count the number of fingers this side. That is 1 2 3. So 30 cosine 30 degree will be equal to 3/4 and take the square root of it. Similarly, you can find out each and every values with respect to these angles. Now we come to the other formula. Sin A plus B equal to sin of A cos of B plus cos of A sin of B. Sin A minus B will be equal to sin of A cos of B minus cos of A sin of B. Cos of A plus B will be equal to cos of A cos of B minus sin of A sin of B. Cos of A minus B will be equal to cos of A cos of B plus sin of A sin of B. Sin A plus B into sin A minus B will be equal to sin square A minus sin square B. Cos A plus B into cos A minus B will be equal to cos square A minus sin square B. Sin B plus C into cos B minus C will be equal to 1/2 in bracket sin of 2B plus sin of 2C. Cos B plus C into sin B minus C, here it will be 1/2 sin of 2B minus sin of 2C. Now come to the tangent A plus B. That will be the tangent of A, tangent of B, 1 minus tangent of A, tangent of B. Tangent pi/4 plus theta will be equal to 1 plus tangent theta, 1 minus tangent theta. Tangent A minus B will be equal to tangent of A minus tangent of B whole upon 1 plus tangent of A, tangent of B. Tangent pi/4 minus theta will be equal to 1 minus tangent theta upon 1 plus tangent theta. Now cot A plus B will be equal to cot of A cot of B minus 1 divided by cot of B plus cot of A. Cot A minus B, that is cot of A cot of B plus डिवाइडेड बाई कॉट ऑफ बी माइनस कॉट ऑफ ए. यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जो एंगल ए है वो बड़ा है एंगल बी से, तो लेकिन कॉट की जो वैल्यू होती है छोटे एंगल का बड़ा होता है, क्योंकि ये जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाता है इसकी वैल्यू कम होती जाती है, इसलिए कॉट बी माइनस कॉट ऑफ ए पॉजिटिव होगा. टेंजेंट ए प्लस बी प्लस सी will be equal to tangent of A, tangent of B, tangent of C minus tangent A, tangent B, tangent C whole upon 1 minus tangent of A, tangent of B minus tangent of B, tangent of C minus tangent of C, tangent of A. Now come to the next formula. अगला फार्मूला देखिए, sin C plus sin D, that is twice sin C plus D by 2 cos C minus D by 2. Sin C minus D, sin C minus sin D equal to, that is 2 cos of C plus D by 2 into sin C minus D by 2 cos C plus cos D equal to 2 cos of C plus D by 2 into cos C minus D by 2. Cos C minus cos D
equal to 2 sine c plus d by 2 into sine d minus c by 2. If you write sine c minus d, then you have to write here minus. But here I have already written sine d minus c by 2. You see what is c and d? I have written here a plus b equal to c, a minus b is equal to d. So a will be equal to c plus d by 2 and b is equal to c minus d by 2. The next formula you can get 2 sine of a cos of b will be equal to sine a plus b plus sine a minus b. 2 cos of a sine of b equal to sine of a plus b minus sine of a minus b. 2 cos of a cos of b equal to cos of a plus b plus sine cos of a minus b plus cos of a plus a minus b. 2 sine of a sine of b equal to cos of a minus b minus cos a plus b. Now double angle formula, sine 2a is equal to 2 sine of a cos of a. In tangent, in the terms of tangent, the sine 2a will be equal to 2 tangent a, 1 plus tangent square a. Cos 2a will be equal to cos square a minus sine square a. 1 minus 2 sine square a or 2 cos square a minus 1. In terms of tangent, it will be 1 minus tangent square a upon 1 plus tangent square a. Tangent 2a will be equal to 2 tangent of a, 1 minus tangent square a, and cot 2a is equal to cot square a minus 1 upon 2 cot of a. Tangent 3a is equal to thrice tangent a minus tangent cube a upon 1 minus 3 tangent square a. Cot 3a will be equal to cot cube a minus thrice cot of a whole upon 3 cot square a minus 1. Now come to this place, sine 3a, that is thrice sine of a minus 4 sine cube a. Cos 3a will be equal to 4 cos cube a minus 3 cos of a. Sin a will be equal to plus minus root of 1 minus cos 2a upon 2. And cos a will be equal to plus minus root of 1 plus cos 2a upon 2. Now in triangle, as we know that a plus b plus c is equal to 180 degree, then from here we can get the value a is equal to 180 minus in bracket b plus c. So sine of a will be equal to sine b plus c. Sine a by 2 will be equal to cos b plus c by 2. Cos of a is equal to minus cos of b plus c. And cos a by 2 will be equal to sine b plus c by 2. This is a complementary form. Now, if trigonometrical equation के लिए हमें कुछ फार्मूले की ज़रूरत पड़ती है. If sin theta is equal to 0, then theta is equal to n pi. Cos theta is equal to 0, then theta is equal to 2n plus 1, 2n plus 1 in bracket pi by 2. Tangent theta is equal to 0, then theta is equal to n pi. If sin theta is equal to sin alpha, then theta will be equal to n pi plus minus 1 whole power n into alpha. Cos theta is equal to cos alpha, that is theta when theta is equal to 2n pi plus minus alpha. Tangent theta is equal to tangent alpha. Theta is equal to n pi plus alpha. Now in triangle, ABC is a triangle and side opposite to A, vertex A is A,
and side opposite to B is small b, and side opposite to capital C, that is the vertex C, small c. With respect to this, we are having the sine formula, that is sine of A upon A equal to sine of B upon B equal to sine of C upon C. This can be also remember like this also, A by sine of A equal to B upon sine of B equal to C upon sine of C. Now for cosine formula, for cosine, A is equal to B cos of C plus C cos of B. B is equal to C cos of A plus A cos of C. C is equal to A cos of B plus B cos of A. Cos of A can also be written like this: B square plus C square minus A square by 2BC. Cos of B will be equal to C square plus A square minus B square by 2CA. Cos of C is equal to A square plus B square minus C square by 2AB. From this we can reduce this formula also. A square will be equal to B square plus C square minus 2BC cos of A. B square will be equal to C square plus A square minus 2CA cos of B. C square is equal to A square plus B square minus 2AB cos of C. This is one formula for the trigonometrical equations, that is sin square theta is equal to sin square alpha, cos square theta is equal to cos square alpha, tangent square theta is equal to tangent square alpha. Here theta is equal to n pi plus minus alpha. Theta will be equal to n pi plus minus alpha. To memorize this formula, very easy to understand like that, just like you see that sine 2A is equal to this. Just you put in place of B, you write down A, so you will get the sine 2A, and this total result will be converted into twice sine of A cos of A. That is in the same here. Similarly, you can just correlate each and every formula, and it will help you to remember for the examination also. Thank you.